Next question in continuation, it says that a silvery white metal X taken in the form of the ribbon. Now look over here, what it is saying that we have taken the metal X, which is what? Which is of the silvery white in the color. And another specification they have given that it is in the form of the ribbon. In the form of the ribbon. After that, what it is saying that when it is ignited and burns in, it is going to burn in the presence of the oxygen. At that time, it provides a dazzling white flame. So it is going to form the powder Y, and this powder Y is a white color. When what is added to this? Now we are adding a water. It dissolves partially to form the another substance Z. So we have to tell that what is the metal X. So who is going to tell the answer? What is going to make Magnesium. going to be a magnesium? Then what is going to be the powder Y? Magnesium oxide. Magnesium oxide. Yes, it is going to be a magnesium oxide. Then C is saying with which substance metal X combines to form the powder Y. So it has combined with the oxygen. D part. What is the substance Z? And write name one domestic use of the substance Z. So when your this Y means your magnesium oxide combines with the water, what it is going to form? It is going to form the magnesium Hydro. hy- hydroxide. Its formula is MgOH2. Now it is saying what is its domestic use. So its domestic use is it is used as a antacid. Like from the market, for what happens is sometimes when you are having the acidity, what you do, you take a Digene or the Gelusil that contains a magnesium hydroxide in it. So बीइंग अ बेसिक यहाँ पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप की वजह से क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ बेस एंड आपके स्टमक में आपको पता है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ HCl. एसिडिटी का मतलब हो गया कि HCl का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो वो इंक्रीज्ड अमाउंट है HCl का उसको ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रल कर देगा. न्यूट्रल करने की वजह से क्या होगा कि आपकी एसिडिटी जो है इट इज गोइंग टू go. Okay, so it is used as the antacid. E. Write a balanced chemical equation of the reaction which takes place when metal X burns in air to form the powder Y. So it is going to be your 2Mg plus O2. It is going to give you a 2MgO. Okay, so have you all noted down this? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, once everyone finished, let me know so I will change the question. Done? Noted Yes, ma'am. everyone? Okay, Yes, fine. ma'am. So your next question is a metal X forms a salt XSO. Now look over here. We are having the one metal which is represented as the X. Now it forms a salt which is XSO4. Now this XO4 forms a solution in water. Means when you are putting a water, it is converting into a solution. Now this solution is going to react with the NaOH.
Now, when it is going to react with NaOH, we get a Y, and this Y is a blue PPT. Now, another hint what it has given that this metal X is used to make the electric wires and the alloys. So what could be the answer over here? अब देखो इस कॉपर क्वेश्चन के अंदर हमारे यस वेरी गुड आपके पास देखो जो दो हिंट्स हैं हिंट क्या हो गई कि एक तो वो इलेक्ट्रिक वायर में काम में आ रहा है एलॉयज के काम में आ रहा है और वो ब्लू कलर का पीपीटी दे रहा है सो इट इज गोइंग टू बी अ कॉपर the B part. Write the name and formula, write the name, formula and color of the salt XSO4. So its name is going to be a copper sulfate Or sulfate. and its formula is going to be CuSO4. Yes. Next is what is the blue PPT? Why? Now look, हम the सी blue फोर PPT का कलर blue color होता है बच्चे आपको याद है लैब में हमने प्रैक्टिकल भी किया था यस मैम बट वो आपने बोला था ना क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है क्रिस्टलाइज नहीं हाइड्रेटेड फॉर्म बट हम लोग लिखते हैं उसको ऐसे ही है जो ये CSO4 है इसको हम लिखेंगे ब्लू कलर ही जो आपका गिव रीजन का क्वेश्चन आता है इन दैट व्हाट वी से कि आपको याद होगा कि मैंने आपको हीट करके बताया था कॉपर सल्फेट कि कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड होगा या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया उसका तो कलर होगा एंड जब आप उसको हीट करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो जाएगा और वो व्हाइट कलर का हो जाएगा तो बेसिकली इन बेसिक या फिर आप कह सकते हैं कि कॉमनली हम उसको इसी फॉर्म में लिखते हैं और दूसरी बात आपके क्वेश्चन ने आपको XSO4 बोला है सो इट इज गोइंग टू बी दिस ओनली ओके ओके okay so the question was saying what is the blue precipitate y so it is going to be copper hydroxide okay and copper hydroxide का फॉर्मूला क्या होता है CuOH टू twice. Now the question is saying write the equation. So what will be the equation over here? CuSO4. ये आप किस में लेंगे aqueous state में लेंगे फिर आपने क्या लिया NaOH लिया NaOH जो है वो भी aqueous state में होगा जब आप इसको react कराएंगे so you are going to get the कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है आपको कैसे मिल रहा है ये एज अ पीपीटी मिल रहा है प्लस यू आर गेटिंग अ Na2SO4 aqueous ओके डन everyone did it Yes, ma'am. okay let's come to the next question the next question says the metal M reacts vigorously now look we are having the M metal okay and it reacts with the water and it forms a solution S and the gas G and the reaction is very vigorous okay now the solution S जो S है what it do it turns the red litmus to blue litmus and this G that is your gas
Yes. Sorry, due to the network issue, I got disconnected. So let me share screen. I hope it is visible to everyone now. Yes, ma'am. Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. So what happens that what the question is saying that this gas G, it is what? It is lighter than the air. Okay. And it burns with a pop-up sound. And this metal M is having the low melting point, and it is used as a coolant in the nuclear reactor. So these are the hints. So what is going to be the metal M? Any of you? Any of you? What is going to be the metal M? Sodium. Yes, it is going to be a sodium. Next, it is saying what is the solution S and is it acidic or alkaline? अब देखो सोडियम को जब आप H2O के साथ रिएक्ट कराओगे, so what it is going to give? It is going to give you a NaOH. NaOH क्या होता है? Sodium hydroxide. Now, because of the presence of this OH over here, it is going to be a alkaline in the nature. C. What is the G gas? G gas is going to be a hydrogen gas, isn't it? Because it is lighter than the air and it burns with a pop-up sound. D, it is saying write a balanced chemical equation for the reaction which takes place when sodium reacts with H2O. Okay. And is this reaction exothermic or endothermic? Exothermic. Exothermic. Yes, it is going to be a exothermic. So noted everyone? मैम कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या मतलब है? Can you please repeat? Your voice was breaking. मैम कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या मतलब है? ओके फाइन. देखो जो न्यूक्लियर होते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंस डालते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि कूलेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी हीट है या तो वो उसको रिमूव कर सके या उसको वो ट्रांसफर कर सके. ठीक है. बेसिक उनका काम आप ऐसे समझिए कि उसका काम होता है कि हीट को रिमूव करना और फिर उस हीट को रिमूव करके जो आपके इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं या जो एनवायरनमेंट हो गया उसमें उस हीट को ट्रांसफर करना. क्लियर? मैम ये रिएक्शन तो खुद ही एक्सोथर्मिक है. हाँ. एंड लाइक व्हेन यू विल बी कमिंग बैक टू द स्कूल मैं आपको दिखा भी दूंगी. अदरवाइज जैसे हमारे पास क्या है कि जो लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है उसके पेलेट्स आते हैं. पेलेट्स मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में होता है. आप जब उसको पानी में डालते हो ना इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. आपका जो बीकर है जिसमें हम उसको डिसॉल्व करते हैं वो एकदम गर्म हो जाता है. ओके. ओके मैम. ओके देन. और हाँ एक और चीज जो कूलेंट जैसे यहाँ पे हमने सोडियम लिखा है तो एक चीज और फॉर योर नॉलेज याद रखिएगा. सोडियम के अलावा हम हैवी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, सोडियम पोटेशियम एलॉय इनको भी यूज कर सकते हैं. मतलब एनी ऑफ दिस कैन बी यूज एज अ कूलेंट. क्लियर? यस Okay, मैम. let's come to the next question. The question number 53.
क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट इट सेज व्हेन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब आपके पास क्या है, एक्स एंड वाई का जो है मिक्सचर है, इसको आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं टू द 3 एटमॉस्फेयर देन पास्ड ओवर consisting chromium oxide. So it is being passed over here with the zinc oxide and the chromium oxide over here. Then it forms a uh, and the temperature 300 degree centigrade. Then we get a organic compound Z. और इस Z का फॉर्मूला क्या है, CH4O. ये CH4 जो है ये एक हिंट है हमारे लिए. X जो है it is a poisonous gas and it forms which is formed in appreciable amount when a fuel burns in limited supply of oxygen, and Y is a gas which can be made by the action of the dilute acid. Means आप Y को कैसे बना सकते हो, that you are going to take a dilute acid and any active metal. फिर जो ये Z है, Z जो है it is a organic compound which can react with the sodium metal to produce a hydrogen gas. So we have to identify X, Y, Z. अब देखिए यहाँ पे उसने बोला कि it is a poisonous gas. So it is a carbon monoxide. Then it is saying कि Y जो है वो हमें कैसे मिलता है कि आप एसिड और मेटल का रिएक्शन करा दो. ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूसेस अ हाइड्रोजन गैस एंड इट इज सेइंग कि आपको क्वेश्चन में क्या है, CH4O. CH4O जो है ये किसी का भी जनरल फॉर्मूला नहीं होता है. इसको जब आप रीअरेंजमेंट करेंगे इट इज गोइंग टू गिव यू अ CH3OH. CH3OH का नाम होता है मिथेनॉल. बेसिक है इट इज अ अल्कोहल. B part is saying write a balanced equation of the reaction which takes place when X and Y combine to form the Z. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, that you are taking what over here. अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखें इसमें क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड था प्लस क्या था, हाइड्रोजन गैस था. So when they are going to combine it is going to give you a CH3OH. That is your methanol. अब इसको बैलेंस कौन करेगा इक्वेशन को, ओवर हियर वी आर हैविंग द फोर हाइड्रोजन्स और यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है. यहाँ पे लिखेंगे इट इज गोइंग टू बी बैलेंस एंड यहाँ पे इस सारी कंडीशंस जो हैं वो लिखेंगे. ओके क्लियर, is it clear to everyone? Can we move ahead? Can we move ahead with the next question? Can we move ahead, students, with the next question? Arshpreet, Mannat, Yes, ma'am. Ayushi. Okay. So your next question is solid compound A. आपके पास एक compound A है which is white and its state is solid. Decomposes rapidly on heat.
आप उसको हीट करते हैं, हीटिंग ओवर हियर इन द प्रेजेंस ऑफ अ ब्लैक सब्सटेंस एक्स। आप एक्स जो है आपके पास वो ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस है, टू फॉर्म अ कंपाउंड बी and a gas C is formed. When aqueous solution of B is reacted with the silver nitrate, it gives a white PPT of AgCl. Then a white PPT of AgCl is obtained along with potassium nitrate. So it is going to give you a KNO3. The gas C does not burn itself but helps in burning the other thing. So what is going to be a compound A? We have done this particular equation in examples, in notes. Any of you? Look, the solid A is going to be a potassium chlorate. It is a KClO3. अब when you are going to heat it, it means thermal decomposition हो रहा है. Your X जो है वो black color का substance है, so always remember it is an example of a reaction in the presence of a catalyst also. तो यहाँ पे जो catalyst है, what it is going to be? The catalyst is going to be a MnO2, that is manganese dioxide. See, what is the gas over here? The gas C is going to be a oxygen. And D, what do you think the, sorry, this is going to be the D, MnO2, and its function is going to be a catalyst. B, what is the compound B? Compound B क्या है? आपको thermal decomposition के बाद मिला है. So it is going to be your potassium chloride. And last it is saying the general name of the substance like X, तो general name हम लोग use करते हैं उसके लिए catalyst. ओके, एंड कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में तो होते हैं लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपका जो रिएक्शन का रेट है उसको या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होते हैं. ठीक है, सो नोटेड एवरीवन दिस? Everyone has noted this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, okay. Next, let's come to the last question, that is the gas A. A जो है आपकी gas है, which is a major cause of the global warming. अब हमें यहाँ पे एक hint मिल गया. It combines with the hydrogen oxide. अब हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है, मतलब कि वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है. तो आपको ये पता लग गया कि हाइड्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे है. बी, इन द नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर सी. सी की प्रेजेंस में ये कंबाइन होता है, तो हमें यहाँ पे देखो बी तो पता लग गया. एंड अ ग्रीन मटेरियल डी, आपको डी भी चाहिए टू फॉर्म अ 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ई. ई के पास क्या है? 6 कार्बन है. एंड अ गैस एफ which is necessary for the breathing. तो आपका A कंपाउंड क्या हो गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए? CO2. 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 B, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ B? तो B हमें पता लग ही गया कि वो वाटर है. C, C, अब आपको देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कंबाइन होते हैं, सो किसकी प्रेजेंस में होते हैं? इन द सनलाइट. Sunlight and Sunlight chlorophyll. and chlorophyll. एंड आपका डी क्या हो गया? आपका डी हो गया यहाँ पे इसने बोला कि इट इज गोइंग टू बी दिस, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द डी? इट इज गोइंग टू बी द क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल हमें कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, और यू कैन से इन द ग्रीन लीव्स. आपका जो ई है, ई इज गोइंग टू बी व्हाट? क्या होता है वो? C6H12O6. यस, वेरी गुड. सो इट्स नेम इज गोइंग टू बी अ ग्लूकोज. और F क्या होता है? इट इज अ Oxygen.
ऑक्सीजन एंड ये किस में हेल्प करेगा इन द मतलब हमें कब मिला ये बाय द फोटोसिंथेसिस. So noted up to here everyone. Yes, ma'am. Okay. So up to here we are going to do. All of you please finish your this work up to today. Okay? Excuse me, ma'am.